Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. This is a video on daily news and editorial analysis, which I'll be covering from the Hindu and Indian Express. So the most important news and editorial of the day will be discussed in this session. Let's get started with today's news topic list. Today is 2nd of February. The first topic is Agritech Drones Startup Fund in Focus. We'll see the budget focus upon this agriculture tech sector. Second, fund to implement Ken Betwa River Linking Project, an important project. Third, budget extend more shops for IFSC. We'll see the detail of this as well. Increase in budget for allocation for Home Affairs. So the Ministry of Home Affairs has seen increase in the total budget allocations. And the last is an editorial, a takeaway, a good infrastructure push, right? So this is an editorial from the Hindu. And just to tell you, today the discussion is more or less inclined towards the budget that was presented yesterday. तो जितनी भी न्यूज़ है वो कहीं ना कहीं बजट के इर्द गिर्द ही है और सारी बातें बजट के कंटेक्स्ट में की गई है कि हर सेक्टर में किस तरह की एलोकेशंस है, राइट. वी हैव आवर एनालिसिस ऑफ द बजट, यू कैन चेक आउट. मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दी है, आप ज़्यादा जानकारी वहाँ से भी देख सकते हैं बजट की डिटेल सेशंस. And we'll have the MCQ sessions also. Yeah, this is for practice. You have to practice current affairs question at the end of this video. So without any further delay, let's get started. And if you're new to our channel, do not forget to subscribe Apti Plus Academy for Civil Services on YouTube. If you like this video, if you find this video informative and helpful, do not forget to press a like button. So the first news, that is Agritech Drones Startup Fund in Focus. This is important for General Studies Paper 2, Government Policies and Intervention for the Development of Various Sectors and Issues Arising from it. So we'll understand how the drones, the startup and the fund that is coming from the government would definitely help to harness these activities. So the Union Budget 2022 that was proposed yesterday, it aims to empower the startup in the country by incorporating the use of drone in various sectors, right? So what government has basically tried to come up with this. जो भी ऐसे इंटरप्राइजेज है, जो स्टार्टअप्स हैं, जो ड्रोन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना चाहते हैं, स्पेशली डेडिकेटेड टू द एग्रीकल्चर और फिनटेक स्टार्टअप, दे वुड बी प्रमोटेड फॉर वेरियस स्केल्स पे, अलग अलग लेवल पे, अलग अलग सेक्टर्स पे प्रमोट की जाएंगी. Now the government would also aim to provide entrepreneurial opportunities through a dedicated portal. So very soon government would be launching a dedicated portal that will help them to get an idea, get registrations and all sort of benefits in terms of promoting the drone activity in our country. Third, it will also offer the financial support to the startup interested in venturing into agriculture and rural enterprises. So this two area, agriculture as well as rural enterprises, would be the focus area in terms of harnessing the empowerment of the drone activities in our country. Now, the other drone, specifically dedicated drone, was Kisan drone, which has focuses upon in this budget. तो स्कीम लाई जाएगी जहाँ पे PPP मॉडल पे काम की जानी है, एंड द फर्स्ट ड्रोन वुड बी लॉन्च्ड फॉर फार्मर. सो दिस पर्टिकुलर स्कीम वुड हेल्प द PPP मॉडल एंड इवन हेल्प द फार्मर्स टू गेट थिंग्स डन. तो ये जो इमर्जिंग एग्रीकल्चर सेक्टर्स हैं, दैट वुड बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द एविडेंस डिजिटल फार्मिंग. सो व्हाट गवर्नमेंट इज ट्राइंग, अगर इस तरह की जो किसान ड्रोन होगी, it will help farmer in crop assessments, digitalizations of land record and spraying of insecticides and nutrient in the field. You can see this drone, किस तरह से ये जो drone है, ये इस particular crops के ऊपर pesticides को spray कर रही है ताकि जो फ्यूचर में इस तरह के डैमेजेस हो सकते हैं क्रॉप को, उससे बचाया जा सके. सो द वाइडर फोकस ऑफ द ड्रोन टेक्नोलॉजी हैज बीन प्रॉमिस्ड बाय द मिनिस्टर इन दिस पर्टिकुलर यूजेस दैट आई हैव टोल्ड यू, राइट. सो प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि ड्रोन एक्टिविटीज खास करके किस तरह से फार्मर्स की हेल्प कर सकती है. Now the fact is that the budget speech also emphasize on the efficient use of land resources via technology. और हर एक स्टेट को भी इंकरेज की जाएगी ताकि वो यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर्स जो है उनको फैसिलिटेट करे, एंड देयर वुड बी IT बेस्ड मैनेजमेंट ऑफ द लैंड रिकॉर्ड. नो, प्रीवियसली ऑल्सो गवर्नमेंट हैज कम अप विद दिस स्कीम जहाँ पे लैंड रिकॉर्ड की क्या नहीं है, पार्सल्स की, खास करके जो पार्सल्स में लैंड्स हैं उनकी रिकॉर्डिंग्स करनी, उनकी आइडेंटिफिकेशंस करनी, उसकी लैंड रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए this number, the unique land parcel identification number, will definitely help, and this is only possible once we incorporate the large number of drone activities. Now drone Shakti, this is another broad range mission by the government. तो बजट में जो ड्रोन शक्ति स्कीम अनाउंस की गई है, दैट कैन बी ट्रांसलेटेड एज अ पावर ऑफ ड्रोन,
और ये किस तरह की मिशंस है जहाँ पे कंजर्वेशन वाटर या फिर बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारे चीज़ों में गवर्नमेंट इसे यूज़ करेगी. एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लुक फॉरवर्ड टू मेक इंडिया अ ड्रोन हब बाय 2030. So this is a timeline that was provided, and expert says that it will initiate make in India drone sector, which is a market of $5 billion. So definitely not in India, but in most developed countries, we have seen that the logistic part or the delivery part is also taken care by the drone, right? So startup would be promoted in India to facilitate the drone शक्ति, जो कि वेरिड एप्लीकेशंस है, जैसे ड्रोन्स एज अ सर्विसेज, इसको DRAAS भी कहते हैं. दिस वुड बी प्रमोटेड इन इंडिया. नाउ हाउ द elaborated part of this would be done. So drone as a services would eliminate the need for government department and to purchase the drones, right? Instead, जो departments होंगे वो rent कर सकते हैं drone को. It would allow them to assess the light and take advantages of the best जो available होंगे market में latest technology के साथ, and this can be just rented out to get the benefit of it. बाद में procurement government bulk में भी कर सकती है. Now enabling drone as area services would facilitate the drone activities, which will open doors to 30,000 crore drones. बेसिकली इसकी परचेजेस की बात करें, मार्केट अक्रॉस पैन इंडिया एक्सपैंड की जा सकती है हर एक स्टेट्स में. वैसे रीजनल जगह पे जहाँ पे ड्रोन हेल्प करेगी, उन सारे जगह पे इनकी परचेजिंग और प्रोक्योरमेंट भी होगी. Now, the other news, fund to implement Ken-Betwa river linking project. This particular news is important for General Studies Paper 2, Functions and Responsibility of Union and States, Challenges Pertaining to the Federal Structure. So what is detail in this budget? So the Union Budget 2022 and 23 has earmarked upon 1400 crore rupees for the implementation of the Ken-Betwa project. एक बहुत ही important projects है ऐसे बुंदेलखंड रीजन के लिए जो ड्राउट्स एरियाज में आते हैं, और बहुत सारी इसके एडवांटेजेस है. विल अंडरस्टैंड द डिटेल ऑफ दिस. सो द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ Ken-Betwa लिंक प्रोजेक्ट इज एस्टिमेटेड, द टोटल कॉस्ट जो एस्टिमेट की गई है वो 44,605 करोड़ रुपीज है. बट इनिशियली टू स्टार्ट दिस गवर्नमेंट हैज एलोकेटेड 1400 करोड़ रुपीज, राइट? एंड वर्क ऑफ द प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड इन 8 years. तो हर एक साल जो एलोकेशन है वो इंक्रीज की जाएंगी और एफिशिएंट वे से इसकी मॉनिटरिंग होगी कि किस तरह से ये प्रोजेक्ट बन रही है. वंस द एक बार में इकट्ठे फंड्स को एलोकेट नहीं की जाती है. दिस इज बीइंग earmarked in a phased manner. Now you can see this map how the linkages has been done. This is the area. This is the Panna Tiger Reserve, and this is the river. You can see here. This is the Lalitpur region, or basically you can say this is the MP region, right? So ये पूरी Ken River है. This map work is again important for you, right? And this is Betwa River, again in the Madhya Pradesh region. So what is the advantages of this project? इस project के अंदर जो water है Ken River से ट्रांसफर की जानी है बेतवा रिवर में, और दोनों रिवर की जो ट्रिब्यूटरी है, दिस रिवर बिलोंग टू यमुना. दिस इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. नाउ दिस प्रोजेक्ट विल कवर द बुंदेलखंड रीजन, जो कि एक ड्राउट प्रोन रीजन है, एंड विच इज स्प्रेड अक्रॉस 13 डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश. तो ये एडजॉइनिंग दोनों स्टेट्स को करती हैं, और कितने डिस्ट्रिक्ट्स इसमें आते हैं? ऑलमोस्ट 13 डिस्ट्रिक्ट. सो दीज 13 डिस्ट्रिक्ट वुड बी बेनिफिटेड विद दिस रीजन. बट सम क्रिटिक्स सेज दैट यहाँ पे जो पन्ना टाइगर रिजर्व है उसको भी काफी ज्यादा हार्म हो सकती है. दैट इज अनदर कोर्स ऑफ एक्शन, दैट इज अनदर लेवल ऑफ डिबेट. वी आर नॉट गेटिंग डिटेल ऑफ दैट. But in this, it aims to provide the irrigation benefits to almost 9.0 lakh hectare of land. Water supply की अगर बात करें, 62 lakh of the people would be provided with the water, and 103 megawatt of hydropower, solar power of 27 megawatt would also be provided. So these are some of the potential benefit of this project that will help the region. जो 13 डिस्ट्रिक्ट हैं बोथ बुंदेलखंड के, जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में लाई करती है. सो दिस इज द पॉजिटिव साइड्स ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, राइट? नाउ मूविंग अहेड विद द अदर रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स. कौन कौन से और ऐसे रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स हैं जिसको गवर्नमेंट ने इस बजट में हाईलाइट किया है? So the draft project reports for 5 river linking projects, which include Daman-Ganga, Pinjal, Tapi, Narmada, Godavari, Krishna, Krishna, Pennar, or Pennar or Kaveri. So these are the 5 rivers upon which the government is looking forward for the linkages. एक बार जब कंसेंसस हो जाएगी, स्टेट जो बेनिफिशियरी स्टेट्स हैं या जो स्टेट्स के साथ इनकी कोलैबोरेशंस होनी है, अगर वो हो जाती है, then central government would providing the support to implement this also. So apart from Ken-Betwa, these are the important project. तो आपको मैप वर्क में ये सारे रिवर्स भी देखने, because any day UPSC will definitely ask you a question. So make sure you are thorough with the map work with all the rivers and its tributaries.
Now, budget extend more scopes for IFSC. This particular news is important for General Studies Paper 3, India economy and issues related to planning, mobilization, resource growth and development. So यहाँ पे एफर्ट की गई है जहाँ पे गवर्नमेंट कोशिश कर रही है टू प्रमोट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर जो गुजरात में है वहाँ पे एक अलग से द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू हैव अ प्रपोज टैक्स इंसेंटिव इनकम टैक्स इंसेंटिव्स ताकि जो बिजनेसेस एक्टिविटीज़ हैं वो प्रमोट हो and offshore fund management and offshore banking activities at the gift city. Gift city is located in Gujarat. You can see this is a master plan of gift city across the river Sabarmati, right? This is a river here and this is the entire gift city which you can see at the outskirts of Gandhinagar. Now, what is a proposal in the budget? So, the union budget, which was presented yesterday, that allowed for world-class foreign university and institutions to offer courses in financial management, चाहे वो fintech की बात हो, science technology की बात हो, engineering हो, mathematics हो, and free from domestic regulation. So, this is how this is going to be the four visions of the government in terms of promoting a high-level, world-class foreign institutions. और इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर बनाई जाएगी. दिस इज IAC, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर वुड बी डेवलप्ड इन द गिफ्ट सिटी ताकि जितने भी इंटरनेशनल लेवल के जो डिस्प्यूट्स हैं उनके रिजोल्यूशंस की जा सके. And even the International Arbitration Center will strengthen the dispute resolution mechanism of the GIFT IFSC to ensure that ease of doing business is enhanced in India और इंडिया की जो ओवरऑल रैंकिंग है ease of doing business में वो भी अच्छी हो सके. Now several global efforts for the capital is also there. Sustainable and climate finance in the country would be facilitated in the gift city. But the critic says कि सारी चीजें सिर्फ गिफ्ट सिटी के लिए क्यों की जा रही है, कोई पैरेलल एक सिटी क्यों नहीं बनाई जा रही है जहाँ पे इसी जैसे गिफ्ट सिटी बनाई गई है उसी की जैसे और भी कुछ डेवलपमेंट हो. सो दिस वुड बी द ओनली सिटी इन इंडिया दैट हैज एट दिस मोर लॉट फैसिलिटीज. गिफ्ट सिटी के बारे में डिटेल में समझेंगे. So now what is IFSCA? This is International Financial Services Center Authority, which was established on April 27, 2020 under International Financial Services Center Authority Act 2019, right? और इसकी जो हेडक्वार्टर है वो गिफ्ट सिटी गांधीनगर में जहाँ पे वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जा रही है. जितने भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर जो इंडिया के टॉप कंपनीज हैं IT कंपनीज वो वहाँ पे स्टैब्लिश की जा रही है. So what are the services that is being provided by IFSC? So ये fund raising services for individual provide करेगी, corporates और government के लिए भी. So this would work on 3 level entity. And asset management and global portfolio diversification would be there. That will also call for fund management, insurance companies and mutual fund. Wealth management जितनी भी SIPs या फिर जितने भी आप forex देखेंगे या फिर आप mutual funds की बात कर ले, share market की बात कर ले, the wealth management as a part of the company would also be established. Global tax management, cross-border tax liability, providing an opportunity for the financial intermediaries. These are the part of the IFSCs. उसके अलावा ग्लोबल और रीजनल कॉर्पोरेट ट्रेजरी मैनेजमेंट होगी जहाँ पे लिक्विडिटी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एसेट लाइबिलिटी और एसेट लाइबिलिटी मैचिंग की जाएगी. Risk management operations such as insurance and reinsurance are the part of an IFSC which is established in Gift City, Gujarat. Merger and acquisitions activities across the ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन जितने भी इंटरनेशनल कॉर्पोरेशंस होगी MOU साइंस होते हैं PPP मॉडल पे जो भी काम होनी है वो भी पॉसिबल हो पाएंगी IFC के थ्रू, राइट. So these are some of the important work that would be done under the IFSC and these are the services which an IFC can provide. Now the other news is increased in the budget for allocation for the home affairs. This particular news is important for General Studies Paper 2, Government Policies and Intervention for the development of various sector and issues arising from it, design and implementations. सो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने डिसाइड किया है, बेसिकली बजट में डिसाइड की गई है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैं उनमें एलोकेशंस हाई की जाएगी. दिस इज अराउंड 1.8 लाख करोड़ रुपीस ऑफ यूनियन बजट विच इज प्रोवाइडेड फॉर 2022-2023. 11% हाइयर बजट इस बार एलोकेट की गई है कंपेरेटिवली. जो पिछले साल थी वो 1.66 थी. यू कैन सी दिस वाज 1.6, नाउ इट इज 1.85. So the 11% hike is there in terms of the total budget allocation for the Ministry of Home Affairs, right? And अगर बात करें majority of spending that would go to central police organization like CRPF, Central Reserve Police Force, Border Security Force, ताकि जो infrastructure development होनी है international borders के लिए उसमें ये fund utilize की जा सके. So what is the priority area of this budget? How this things would be utilized? जो fund 11% की increase की गई है, where this is going to be utilized. First and foremost is modernization of police forces, intelligence gathering apparatus
परचेज की जाएगी, प्रोक्योर की जाएगी। विमेन सेफ्टी इज अगेन प्रायोरिटी। साइबर सिक्योरिटी, कंसिडरिंग द फैक्ट जिस तरह से साइबर अटैक्स या साइबर सिक्योरिटी के लेकर कंसर्न रेज की गई है, तो जो बजट के एलोकेशन है वो यहाँ पे भी होंगी। एंड डेसिनल सेंसस, जो बॉर्डर एरिया में जो इंडिविजुअल्स रहते हैं उनकी सेंसस की जाएगी, दैट हाउ मेनी पीपल आर रिसाइडिंग इन द बॉर्डर एरियाज। अदर एलोकेशंस की अगर बात करें, दैट डेफिनेटली सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैव एलोकेटेड अराउंड 87,444 करोड़ रुपीस, जो कि 12% इंक्रीज है प्रीवियस ईयर के एलोकेशंस के मुताबिक। And the border infrastructure management has been allocated with around 600 crore rupees in this budget, right? And the government is also focusing to improve the infrastructure in the border areas, और जो activities होंगी वो include करेंगी construction of village infrastructure, चाहे वो tourist centers हो, road connectivity हो, provisions of decentralizing and renewable energy. So these are some of the important efforts that would be done from the budget that has proposed 11% increase in the defense, or you can say not actual in defense, in the police forces or in the paramilitary forces. A takeaway is good infrastructure push. This is an editorial written by C. Rangarajan, who is a former economic advisor also. He's a ये Prime Minister Economic Advisory Council के chief भी रहे हैं, right? And another part is D.K. Srivastava. He is a director from Madras School of Economics. This particular news is important for General Studies Paper 3, inclusive growth and issues arising from it. So what I'm going to discuss under this editorial, five important subheads होंगे. First is perspective on growth, revenues and expenditure, infrastructure expansion, revenue expenditures, or debt or physical balances. Entire editorial themes around a roadmap for the infrastructure development, जो कि इस बजट की ब्रॉड बेस्ड या एक रोड मैप बनाई गई है फॉर द फ्यूचर. So the union budget, which was presented 2022, has led a clear emphasis on the expanding capital expenditures. How this would expand, we'll see. Almost 45.2% जो fiscal deficit है, that is being devoted to financing the capital expenditure, right? And this should accelerate growth not only, but also you have to see that how following the years in terms of infrastructure development या फिर जो capital expenditures है उसकी line length या एक broad roadmap किस तरह से होने वाली. Perspective on growth. The current budget provides for a nominal GDP, which is estimated around 11.1%. This is for the financial year 2022-2023. और जो economic survey है उन्होंने भी अपनी real GDP की अगर बात करें, that had said it would be around 8% to 8.5%. So this is an estimated growth for this year. And taking the lower end of the real GDP, अगर ये estimate की जाए, this would be around 8%, right? और एक implicit price deflator की बात करें, this is IPD. This is based on the inflation of 2.9%, which deliver the nominal growth of 11.1%, right? In previous surveys also 11% की estimations की गई थी, but at this point of time, some real figure would be around 8%. Now, revenues and expenditures की अगर बात करें, according to 2011 and 22 revenue estimates, जो ERE होती है, revenue estimates होती है, उनमें गवर्नमेंट ने कहा है कि जो ग्रॉस रेवेन्यू या फिर जो नेट टैक्स रेवेन्यू दैट इज एस्टिमेटेड टू ग्रो अराउंड 21.1% एंड 23.8% रेस्पेक्टिवली. तो अगर ग्रॉस नेट की बात करें दिस वुड बी 24.8 और नेट टैक्स रेवेन्यू की बात करें तो ये 23.8% होगी. Now in 2022-2023 the budget estimates that it has been brought down to 0.9% और जो digitalizations हैं उसको expand करनी है, formalization of economy would be there, tax assesses और जो tax buoyancy है which may also be around higher than 9.0%. What is this tax buoyancy? तो tax buoyancy की अगर बात करें it explains the relationship between the changes in the government tax revenue और जो ग्रोथ हो रही है रियल जीडीपी में उसमें क्या चेंजेस कैलकुलेशंस है, जो डिफरेंस है उसको कैलकुलेट की जाती है. इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन की अगर बात करें द स्ट्रक्चरल शिफ्ट टुवर्ड्स द इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन इज क्वाइट वेलकम. यहाँ पे ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी बिल्ड करने की कोशिश की गई है जहाँ पे नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को अंडरटेक किया जाएगा. इट वुड बी ऑल्सो इंडिकेटिंग द सेक्टर वेयर डिफिसिएंट इन्वेस्टमेंट एज कम्पेयर टू ओरिजिनल टारगेट वुड बी डन. And the budget provide for incentivizing the states to expand their capital expenditure by permitting fiscal deficit limit up to 4% of the GDP. So these are the target that has been set by the government. And in addition, 1 lakh crore rupees has been allocated for the state, जहाँ पे उनके capital expenditures के लिए almost they can also get 50% interest free loan over and above normal borrowing अगर होती है तो, right? So
this is a roadmap in terms of infrastructure expansion, which is essentially very important. But long-term vision से we have to see how the short-term measure is also being aided by the state government. Now, revenue expenditures की अगर बात करें, on revenue side, there is a reductions in the budget total subsidies, which is around 1.2% of the GDP for this particular current year, और 1.9% थी ये पिछले साल में, ये revenue expenditure के हिसाब से. Structural changes की अगर बात करें, food, fertilizer, petroleum subsidy that are not revised, right? इसमें revise नहीं की गई है because the pressure that is mounting due to the high global crude oil prices. So government is not deteriorating on this part, and the burden of interest payment of the percentage to the GDP has gone from 3.5% to 3.6%. ये 11 21 22 के लिए थी और प्रेजेंट में 3.6%, 0.1% की इंक्रीज देखी गई है. Now debt and fiscal balance की अगर बात करें, so according to the estimates जो economic survey में की गई है, this is government said that the relative GDP is close to 90% at the end of 2021 and 2023, and central debt has a 2-year estimations where 59.9% and 60.2 respectively can be anticipated for the coming 2 years. Medium term fiscal policy की बात करें, this indicate reaching a level of 4.5 by 25 to 26. So this is a data driven little bit, तो आपको थोड़ी कुछ चीजें याद रखनी पड़ेगी इसमें. The Center Fiscal Responsibility Management Act, जिसको FRPM Act भी कहते हैं, has to examine the recast of sustainable level of debt and fiscal deficit in the adjustment part. So FRBM Act can be game changer here. It can definitely play a very crucial role in defining and sustainable terms of debt and fiscal deficit that an economy is facing. So this was a part of that editorial. Now moving ahead with the MCQ questions of the day. Before I proceed with the question, just to tell you the answers of yesterday questions, that is for the previous sessions. तो पहले जो questions थे उसके correct option है C. For the second question also the correct option is C. Today's MCQ for practice आपको बताना है World Sustainable Development Summit के कौन-कौन से statement correct हैं. It is an annual flagship summit organized by Greenpeace. The theme of the summit is redefining our common future, safe, secure and environment for all. So do check it out, which among the following is the correct option. The second question is Shramik, that is a dynamic portal for job mapping scale for MSME sector and other industries. The portal use algorithm of artificial intelligence and provide analytical skill training for Shramiks, right? I think most of you must be aware of this correct options because this is the kind of question that was previously also asked. So आप बताएंगे, check करेंगे कौन कौन से इसमें correct options हैं. This was all about the daily news and editorial analysis followed by the MCQs. If you have any other concern, you can let me know. I'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Thank you so much for watching this video.